Hi students, how are you? Students, yesterday I taught you activity 2. Today I will start activity 3. But before we'll start activity 3, let's revise activity 2. In activity 2, I explain you about the shaded part. Shaded part of half. Half part you shade it. So how you will shade it? Suppose I draw a circle here and I divided it into how many parts? That is 2 parts. Now I divide into 2 parts. 1 and 2. Out of 2, 1 part I shade. That is the half part. Clear? Now 1/3. How you shade the 1/3? Now again I draw a circle here and I divide it into 3 parts. Clear? This circle is divided into 3 parts. Now out of 3 I shade the 1 part. That is this part. Clear? Now out of 3, 1 part is shaded. Now the next is 1/4. Now I draw a circle here. Now I divide this circle into 4 parts. Out of 4, I shade 1 part. That is this part I shaded. It means out of 4, 1 part you shade it. That is 1/4. Now student, I ask one question here. The another name of 1/4 is what we called? Tell me. Yes, that is the quarter. 1/4 also called as the quarter. हम 1/4 को क्या कह सकते हैं? क्वार्टर में कह सकते हैं. क्लियर? नाउ द सर्कल बी हियर एंड आई डिवाइड दिस सर्कल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? नॉट टेल मी. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी पार्ट्स आई डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड आउट ऑफ 5, 1 पार्ट आई शेड. Clear? Now, how you write the fraction? That is 1/5. हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? आपको हमने बताया था कि फ्रैक्शन हम अभी हम इसी नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाउ वी फाइंड आउट द फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं. और पहले हमने बताया था कि न्यूमरेटर पार्ट था, पहले अबव द लाइन लिखते हैं, डिनोमिनेटर में बिलो द लाइन लिखते हैं. ठीक है? नाउ दैट इज द 1/5. नाउ द नेक्स्ट हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स? दैट इज द सेट ऑफ कलेक्शंस. नाउ हाउ यू शेड इफ सेट ऑफ कलेक्शंस आर गिवन. सेट ऑफ कलेक्शंस गिवन होंगे तो हम उसमें कैसे शेड करेंगे? सपोज I given the 12 balls here. I draw how many balls? 12 balls. 6 and in next line the 6. That is total balls are there. That is 12. Now 1/2 of 12. You shade it. So how you shade it? You find out 12 divided by 2. And the question comes that is 6. So out of 12, how many balls you shaded? That is 6. Any 6 balls you can shade. आप कोई से भी 6 balls इसमें शेड कर सकते हैं. 1, 2, 3, then 4, 5 and 6. In this way you can solve. Out of
of 6, how many out of 12, how many balls you shaded? That is 6. And in which way you find out? In this way you find out the first half of 12, that is 12 divided by 2, it means the question comes 6. 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 6. जो भी हमारा क्वेश्चन आता है नहीं वो बॉल्स या वॉट एवर द फिगर इज गिवन अकॉर्डिंग टू दैट यू शेड इट, उसके अकॉर्डिंग हमें शेड करना होता है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इफ एनी फिगर द सेट ऑफ कलेक्शंस is given and asking will now shade the set of collection, so you can find in this way. जैसा अभी मैंने बताया उस तरीके से हम find out करते हैं. Clear? Now suppose if the question given कि find, calculate, suppose find half of 24. So how you can find out? You write 24 divided by 2 first. In next step, you divide it. Then calculate, that is 12. In this way, if asking find this, then you can find the value of this in this way. Clear? Now, the next example, that is suppose here 1/6 of 36. So how you will find out? First you write 36 divided by 6 and then you divide it, then 6 are 36. Okay. Now clear how you will find out this. Now today we will start the activity 3. जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि अब हम क्या एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे? थर्ड एक्टिविटी. ये हमने 2 एक्टिविटी का. Now we will continue activity 3. Question number 1. I read the question from the book. So, all of you see page number 103. That is, complete the table. Here, the table is given. That is figure and then shaded part. That is numerator. And then total parts, that is denominator, and then the fraction for shaded parts. Fraction for shaded part. Clear? Now children, I draw the figure here. सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. In which way we can draw the figure? Here the figure is given, that is the box. I draw the 10 box here. That is 1, 2, 3, 4, 5. And in another line 1, 2, 3, 4, 5. And out of 10, I shade the 7. That is, I shaded here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now students, the table is given and according to that we fill this. First is shaded part, that is numerator. So here the shaded part, counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we write the shaded part here. Then the total parts, and here the total part is, that is the 10. And then fraction for shaded part. Now how we write the fraction? First we write the numerator, then we write the denominator.
that is above the line, we write always numerator, and below the line, we write denominator. So the numerator here, that is 7, and the denominator is here, that is 10. To make a fraction, that is 7 upon 10. Now, the next figure, I draw this triangle. इसको उल्टा triangle बना देंगे इस तरीके से triangle. Clear? अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रेट, या फिर आप इस तरीके से इस फिगर को बना सकते हैं. पहले आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं कि आपने इस तरीके से सीधा ट्रायंगल बना दिया. क्लियर? और अब आप इसको इस तरीके से इसका उल्टा ट्रायंगल बना देंगे और इस लाइन को क्या कर देंगे, टच कर देंगे. क्लियर? तो हाउ आई विल प्रिपेयर दिस फिगर, ऑल ऑफ यू सी. इसी तरीके से आपको नोटबुक में बनाना है. नाउ आई शेड दिस पार्ट. अब हमने क्या किया बच्चों, इस पार्ट को शेड कर दिया. नाउ हियर अगेन we complete the table according to this. First is shaded part, that is numerator, and the shaded part is here only 1. You write here 1. Now in next, that is the total parts, and the total part we count it 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many total parts are there? That is 6. How many total parts? That is 6. You write here 6, and you write the fraction. So how you will write? First you write the numerator, then you write the denominator. That is 1 upon 6. So 1 upon 6 is a fraction. Now children, I give you some more example. I draw the figure here, and you write the shaded part, total parts, then the fraction. So I draw some more figure. Now more example I give you. Now I draw the figure here, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many boxes I draw it here? That is 6 boxes I draw it. And out of 6, how many boxes we shaded? That is 2 boxes. So shaded parts numerator, that is 2, and total parts of denominator, that is 6. So fraction for shaded parts, that is fraction for shaded part, we write that is 2 upon 6. अब आपको बच्चों समझ आया कि हम फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का कैसे लिखते हैं. दैट इज द फर्स्ट we write the numerator, shaded part. Then we write the total parts, the denominator. Clear? Now one more example I give it to you. That is the, I draw the figure here. That is 1, 2, 3, 4 circles. Okay? Now out of 4, 1 circle I shade. Now shaded part, that is the numerator. How many part I shaded? That is 1. And the total part, that is the denominator. How many total parts are there? That is 4. And how we write in fraction? That is 1 upon 4. Clear? अब आपको बच्चों समझ में आया, जैसे हमारा टॉपिक था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. तो इसमें जो शेडेड पार्ट है दैट इज द न्यूमरेटर, एंड द टोटल पार्ट दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. टोटल पार्ट हमारा डिनोमिनेटर है. तो हाउ यू राइट अ फ्रैक्शन? एक फ्रैक्शन को लिखने के लिए हमें इसमें 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, दैट इज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर ऑलवेज वी राइट अबव द लाइन, एंड डिनोमिनेटर वी राइट बिलो द लाइन. Below the line जो भी नंबर है that is called as the denominator, और above the line that is known as the numerator. Now it is clear. The next question, that is the question number 2. The state write a fraction
क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, फ्रैक्शन लिखना है एंड द स्टेटमेंट इज गिवन. करेक्ट फ्रैक्शन यू राइट डाउन एंड द स्टेटमेंट इज गिवन टू. नाउ आई रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक, दैट इज A. Question number 2, the A part. Aditya has 15 pens, out of which 8 are blue. The fraction of pens which are blue is. हमें फ्रैक्शन लिखना है जो पेन्स ब्लू है उनका. Here given the total pens. How many total pens are given here? That is 15. And how many pens are blue? That is 8. And you write the fraction those which are blue. Your fraction, how you write it? That is 8. You write in the numerator, and 15 you write in denominator. Then we will make a fraction, that is 8 upon 15. Clear? Now the B statement. If statements are given, then also we read it and then understand it. Then we write in fraction. Uday completed 4 out of 9 sums in maths. The fraction of sums completed is. अब हमें क्या गिवन है बेटा, 9 सम्स गिवन थे. टोटल हाउ मेनी सम्स, 9 सम्स. और उदय ने कितने कंप्लीट किए आउट ऑफ 9? दैट इज 4 सम्स इज कंप्लीटेड. एंड यू राइट द फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीटेड सम्स. तो हाउ यू विल राइट आउट द फ्रैक्शन? दैट इज 4 अपॉन 9. Because the total sums you write in denominator, and how many sums completed, that is right in the denominator. Clear? Now the C part. The C part is Karan colored 7 out of 8 bundles in the picture. The fraction of candles which were colored is. Karan colored 7 out of 8 candles. In the picture, 8 candles are given, out of which 7 he colored. And the fraction of candles which were colored. और हमें colored candles का fraction. So how we will write it? First, we write the colored candles in the numerator. That is given. How many candles be colored? That is 7. 7 we write in the numerator. And the total candles, that is 8, we write in the denominator. So the fraction becomes 7 upon 8. 7 कहाँ है? That is the numerator. We called it as numerator, and 8 the number we called it is denominator. 8 को हम क्या कहेंगे? Denominator. 7 को क्या कहेंगे? Numerator. Now the question number 3rd. In question number 3rd, the separate numerator and denominator are given. And you write a fraction. So how you write it? That is question number 3. Write a fraction with 9 as the numerator and 16 as the denominator. अब बच्चों numerator का short form we write as n. Numerator is given, that is 9, and the denominator is given, that is 16. The short form of denominator is d, and the short form of numerator, that is n. The numerator given, that is 9, and denominator is given, that is 16. Now we write a fraction, and it is very easy. अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना है,
और हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बता रखा है। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर कहाँ आता है, डेट इज अबव द लाइन, और डिनोमिनेटर कहाँ आता है, बिलो द लाइन। तो वी राइट अ फ्रैक्शन लाइक दिस, दैट इज 9/16। अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया और हमने फटाफट लिख लिया अपना फ्रैक्शन, दैट इज 9/16। Now I ask one example, that is I am given you that is numerator is equals to 4 and denominator is equals to 15. Now you write a fraction. Tell me what is the answer of this? Yes, that is 4/15. Yes, the answer is 4/15. हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, that is 4/15. Clear? 4/15 is your answer. अब बच्चों कई बार होता है कि जब हमारे पास में कंप्यूटराइज शीट आती है तो उसमें इस तरीके से 3/4 फ्रैक्शन ना लिखकर हमारा 3/4 होता है। हमारा किस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से। इसका मतलब भी ये क्या होता है, 3/4, मतलब 3 किसमें, न्यूमरेटर में है और 4 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इस तरीके से डिवाइड में साइन नहीं आ पाता है, तो कंप्यूटराइज में आपको इस तरीके से स्लैश नजर आएगा, 3/4। अगेन आई रिपीट दिस, 3/4 आएगा। और इस स्लैश का मतलब है, स्लैश का मतलब क्या है, अपर। क्लियर, 3/4 इन दिस वे। Clear this? Now students, you can revise all these questions and question number 2 do in book.